हेलो एवरीवन ताले आमे ग्रोथ आउ डेवलपमेंट रो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर देछंती बा पेडागोजी रो फर्स्ट चैप्टर आमे कंप्लीट करछंती। तो आज आमे फर्स्ट चैप्टर रो किछटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करबा। ताले हमर फर्स्ट पर आमे सेकंड थर्ड आ सब चैप्टर कवर करबा, किंतु गोटे चैप्टर सरिला परे आमे 2 दिन रो क्वेश्चन आंसर सेशन रखिबा। 2 दिन केवल आमे क्वेश्चन आंसर करबा आमर एमसीक्यू सॉल्व करबा, तापर आमे नेक्स्ट चैप्टर को जिबा। कहीं आमर जो प्लान आमे करिसेंती 20 डेज भितर आमर सरी जीवो पेडागोजी ओडिया इंग्लिश रो कांसेप्ट में आमर चैप्टर। तेनो आमे एई जो प्लान को स्टिक रहिबा एंड मझे मझे थ्योरी पढ़िबा सहित क्वेश्चन भी करबा। कहीं क्वेश्चन कले आमे जानि परिबा आमे जो पढ़िसेंती एक्चुअली आमे बुझिसेंती कि बुझि नांती। ताले ठीक अछि, देखंतु कोन देजी फर्स्ट क्वेश्चन। ग्रोथ रेफर्स टू, ग्रोथ कहले कहा को बुझा जाए? ग्रोथ कहले फिजिकल डेवलपमेंट को बुझाए बा, जोटा कि क्वांटिटेटिव चेंज इन ह्यूमन बॉडी। डेवलपमेंट रेफर्स टू, डेवलपमेंट होची बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तापर क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग चेंज व्हिच इज नॉट कंसर्न्ड विथ ग्रोथ, ए भितर कोटा ग्रोथ न देखो हाइट बॉडी साइज वेट ये तीनटा जाक ग्रोथ बा फिजिकल आमर डेवलपमेंट को बुझाऊे, किंतु इंटेलिजेंस नुह। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट टू ईच अदर। ये स्टेटमेंट है ट्रू ना फॉल्स? देखो ग्रोथ और डेवलपमेंट इंटर रिलेटेड, इट है ट्रू। द स्ट्रक्चरल चेंज ऑफ द बॉडी इज नोन एज, बॉडी रो स्ट्रक्चरल चेंज को कौन कहा जाए? ग्रोथ कहा जाए। एंड फंक्शनल चेंज को डेवलपमेंट। तापर क्वेश्चन, द फंक्शनल चेंज ऑफ द बॉडी डेवलपमेंट। फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच कैन बी एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल मेजर्स, कोटा न्यूमेरिकल मेजर रे एक्सप्रेस करि परिबा? ग्रोथ को आमे न्यूमेरिकल मेजर रे एक्सप्रेस करि परिबा। फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच इज मोर कॉम्प्लेक्स टू एक्सप्रेस थ्रू न्यूमेरिकल मेजर, ए भितर कोटा न्यूमेरिकल मेजर रे करि होबने? डेवलपमेंट। तापरे ग्रोथ इन कंटिन्यूस ओनली फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ लाइफ, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बट ट्रू। कहीं ग्रोथ मैच्योरिटी आसी जाए जिते ग्रोथ बंद हो जाए, कहीं देखियो जिते आमको 22-23 वर्ष हो जाए से आमर हाइट आउ बढ़ेनी, माने आमर ग्रोथ जोटा हवा कथा सेटा आमर रही जाए। देखो आम जदि केतटा जिनस आमर बढ़ कम सेटा आमर लाइफस्टाइल उपर डिपेंड कर जोटा कि आमर बॉडी वेट, ठीक है। किंतु आमर जो ग्रोथ आम कहले सेटा भी गोटे प्रकार ग्रोथ, किंतु मैच्योरिटी रे आमर जो ग्रोथ हुए सेटा मैच्योरिटी रे ही बंद हुए, कहीं ग्रोथ गोटे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नुह। डेवलपमेंट कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, कहीं डेवलपमेंट होची लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ग्रोथ स्टॉप्स व्हेन मैच्योरिटी हैज बीन अटेन्ड, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ग्रोथ रिचेस इट्स मैक्सिमम एमंग गर्ल्स एट द एज ऑफ, गर्ल्स मानकर को एज रे ग्रोथ मैक्सिमम थाए? गर्ल्स मानकर को गर्ल्स मानकर 20 वर्ष बेलू ग्रोथ तार मैक्सिमम रे पहुंच जाए थाए। तापरे ग्रोथ रिचेस इट्स मैक्सिमम एमंग बॉयज एट द एज ऑफ 25। ग्रोथ इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, दिस स्टेटमेंट इज ग्रोथ सब एडिटिव, किंतु डेवलपमेंट मे बी एडिटिव or not. Development is both additive and subtractive in nature, this statement is it true. Development is more complex process in comparison to the process of growth, this statement is it a bit true. From the following which is not a principle of development, development follows a pattern, एटा भी तो तार गोटे प्रिंसिपल। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक अच्छे। एटा भी डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक अच्छे। डेवलपमेंट स्टॉप्स एट ए स्पेसिफिक टाइम ऑफ लाइफ, एटा नुह क्या डेवलपमेंट बंद हुए नहीं, एटा थ्रू आउट द लाइफ चले। ग्रोथ प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो, टो टू हेड, बेली टू टो, हेड टू बेली, हेड टू टो। Development proceed from general to specific, this statement is correct but true. At birth head is larger, about 1/4 of the body in length, this statement is correct,
जन्म टाइम रे मुंडर साइज बड़ थाए 5 वर्ष पर्यंत आमर शरीर आकार अनुसार मुंडर आकार बड़ थाए कि बैलेंस हुए आम शरीर आकार बढ़े। हेरिडिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी कोथि में रेस्पॉन्सिबल फिजिकल डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल सोशल इमोशनल को डेवलपमेंट पाई हेरिडिटी रेस्पॉन्सिबल फिजिकल डेवलपमेंट पाई हेरिडिटी रेस्पॉन्सिबल। तापरे एनवायरनमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट टेम्परामेंटल डेवलपमेंट ताले ऑल ऑफ द एबव। एनवायरनमेंट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल डेवलपमेंट कहना फिजिकल डेवलपमेंट क्या हुए हेरिडिटी द्वारा आमर इनहेरेंट जोटा। फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट एन एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट ए कोटा एक्सटर्नल फैक्टर नो ऑब्वियसली हेरिडिटी जोटा कि आम भीतर आसी थाए इनबिल्ड। फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट एन इंटरनल फैक्टर दैट अफेक्ट्स डेवलपमेंट कोटा गोटे इंटरनल फैक्टर नुह। एनवायरनमेंट सहज क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट डिसाइडेड बाय हेरिडिटी height and weight color of the eyes and skin characteristics of hair quality of adjustment with society ए भितर कोटा हेरिडिटी डिसाइड करेनी कोटा हेरिडिटी डिसाइड करनी हाइट वेट एटा तो मोर हेरिडिटी डिसाइड करि पारे क्वालिटी ऑफ एडजस्टमेंट विथ सोसाइटी एटा हेरिडिटी डिसाइड करनी। The physical, social, emotional and language development of a child is greatly influenced by the level of his intelligence. This statement is true. Which of the following is not related to the principle of development? Follows a pattern ठीक अच्छी, proceed from general to specific ठीक अच्छी, continuous process ठीक अच्छी, traits are not related एटा भूल अच्छी माने एटा होचे आंसर। Which of the following is impact of growth and development? Change in weight, change in height, change of motor ability activities, all of the above. ये भितर कोटा growth और development रो गोटे impact तो एटा भी ठीक अच्छी हाइट रो भी चेंज हुए ठीक अच्छी मोटर एक्टिविटीज भी ठीक अच्छी ऑल ऑफ द एबव। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्स थ्रू द लाइफ डेवलपमेंट तो जी लाइफ लॉन्ग। The structural change in the body is the result of rapid cell division. Cell division फल हमारा structural change आसे। Which of the following carries a limited and narrow meaning? Growth, development is a broader concept. Which of the following related to growth? Continuous for a specific period of life, easy to observe and measure, always additive, all of the above. कोटा कहला कि रिलेटेड टू ग्रोथ कोटा ग्रोथ को रिलेट करे कंटिन्यूस पर स्पेसिफिक पीरियड ठीक अच्छी इजी टू ऑब्जर्व एंड मेजर ये भी ठीक अच्छी ऑलवेज एडिटिव ठीक अच्छी ताले ऑप्शन डी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डेवलपमेंट? ऑलवेज स्पेसिफिक कंटिन्यूस फ्रॉम बर्थ टू डेथ क्वालिटेटिव इन नेचर प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ फंक्शनल चेंजेस ये भितर कोटा कहला कि रिलेटेड नुह डेवलपमेंट सहित किंतु ऑलवेज स्पेसिफिक सेटा नुह आमे डेवलपमेंट को प्रेडिक्ट करि परिबा। ग्रोथ प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो। व्हिच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी ग्रोज अर्लियर? अपर पार्ट। Which of the following responses the child show first? Specific, concrete, abstract, general. Child first general response show करे तापरे specific. The brain reaches its maximum size about 6, 7, 8, 10 को एज रे माने को एज बेलू तार मैक्सिमम साइज पहुंच जाए था 6। तापर क्वेश्चन heredity is responsible for physical, intellectual, social both A and B. Heredity physical ପାଇଁ responsible
आउ कौन फिजिकल रेस्पॉन्सिबल आउ जदि इंटेलेक्चुअल कथा देखिबा केबे केबे इंटेलेक्चुअल किए केते इंटेलिजेंट जार बापा माँ जेमती थिबे जार एंसेस्टर मान को कथा देखिबा जेमती पूर्वपुरुष जेमती थिबे जेमती बहुत इंटेलिजेंट तो तार इम्पैक्ट भी पड़े तेन एटा बोथ ए एंड बी मध्य ठीक केबे केबे फिजिकल मध्य हेई पारे तो दुईटा जांको एक्चुअली ठीक फिजिकल इंटेलिजेंट तेन ऑप्शन डी रे जिबा which of the following influences the growth and development of the child constitutional makeup stomatic structure physics and body chemistry all of the above ताले एटा देखंतु ए चारिटा जांको अफेक्ट करे इन्फ्लुएंस करे ताले ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव ताले एठी सरी गला आजिरो पेडागोजी रो क्वेश्चन सेट एई बळी भाबरे आमे आउ दुई तीनोटी क्वेश्चन सेट डिस्कस करिवा टोटल ऊपर आमे 100 to 200 भितर क्वेश्चन दुई दिन माने आज काली भितर डिस्कस करिवा तापर हमरो पेडागोजी रो फर्स्ट चैप्टर रो क्वेश्चन सेट कवर हे जेबा तेनु वीडियोटी जदि भल लागुची वीडियोटी को बहुत संख्या रे लाइक करंतु आम चैनल रे जदि नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु ता सहित वीडियोटी को सांग मान को संगे रे शेयर करंतु ओटीटी पई क्लास हमर स्टार्ट हे जाईची आगो को मध्य जो भी टीटी आसीबो किबा टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट हबो ता पई क्लास हबो आ ता संगे संगे हमर सीजीएल लो मैथ क्लास मध्य होची आगो को सीजीएल एग्जाम अछि आ सीजीएल लो यूज वैकेंसी मध्य 1500 पाखा की वैकेंसी मध्य बाहरी आछि जो माने ग्रेजुएशन कंप्लीट करछंती से माने चाहिले सीजीएल को मध्य टारगेट रखि पारिबे तले ठीक अछि आज वीडियो का मीट रखिबा पुणी आ गोटे नया वीडियो रे देखा हबो थैंक यू।